हे वंशवर्धन, सॉरी, मैंने देखा नहीं तुम्हारा मैसेज. Now I'm live. I had planned to start the stream at 7 a.m. but unfortunately I couldn't do that. बहुत दिनों बाद थोड़ा जल्दी उठा मैं आज. Oh, you're not there. Let's wait for people to join. Stop recording and a chat. Pop-up chat. Live chat. Let me edit it. Hmm. So are we live? Where is my stream? Subscriptions. Here we are live. Where are my birds? क्या मैं अभी भी नींद में लग रहा हूँ? नहीं. Let's get started. Okay. So, hey guys, we are back, and today is day number 2. Am I audible? Okay. Yes, I am audible. ये स्ट्रीम का इनिशियल सेटअप इतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है? कनेक्ट हो जाना यार.
So it's 9 a.m. in the morning. Good morning, everyone, if anyone is watching. And sorry to disturb your sleep so early in the morning. The birds are you alive? Okay, now it's so here I had created a file for learning tree data structures, and I will continue now. Once overturn. Okay, so for someone who is new to this channel, my name is Harshit and I'm final year Tech undergrad. Am I audible? I hope I am. Okay. Hello. Now I have the mic and I must be audible now. And let's get started. Today is day two of preparing for Infosys in 10 days. And yesterday I had my and some exams, so that is why I could not stream this live stream yesterday. And I had not studied anything. I was sleeping after coming back to home. So today we are starting early in the day and we will try to cover three data structures and let me check our schedule. Like not check, but update how we want to cover different topics. Is it visible that Infosys preparation intent? Where is Notion? Infosys. Here we have this. So we need to cover day one and day two topics. Okay, day two is about binary tree level order plus recursion foundation for trees. Okay, level order traversal using queue and basic recursive thinking for tree problems. This up to this topic we need to cover today and we will start with revising array strings and then we will learn about tree node structures and binary tree basics and then we will implement traversal order, in-order, pre-order, post-order, and tree problems, depth of binary tree, count nodes, diameter, easy version. Let's take this
And I don't want to get into array and strings in depth. Also, one more thing, I had created this file covering all the tree data structure concepts and problems. And where is that prompt that we had used? Here's the prompt. So just for my own, for myself, reference for myself. Okay, this is the prompt and oops, yep. Prepare a complete structured, extremely detailed learning plan for topic trees in Java from absolute basic to advanced interview level concepts. And this file is containing all the basic to advanced concepts which are asked related to trees data structures. So we will not be covering it completely, and we will create another file which will cover only the relevant basic standard problems that we can do in 1 or 2 days to be prepared for Infosys assessment. Okay. Live stream, buddy, get back here. Okay. Oh, analytics. I wasted 5 minutes already. So let's get started without wasting any time. And let's go. What we need to do, we need to prepare a new file. Quick revision .txt, and we will create a prompt first and इसको बंद करते हैं for a while. We need one more tab. Here we will ask ChatGPT, what is the problem? For good valid you to us.
Thank you so much, Rohit. But it is not about coming. I'm just documenting my journey, and you should start learning. हम्म, तुम्हारा पता नहीं, मैं तो आता रहूंगा जब तक मैं हूँ। थियोरेटिकल स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम, क्या लिख रहा था मैं? Each topic create detailed revision file containing all the theoretical explanation from basic to advanced, and list problems related to all the topics. This is enough. Let's go. And where are you from, Rohit boy? Are you still there in the stream? But subscription, I don't know. Here's a ready to paste prompt you can give to Copilot. Okay, you're an expert DS algorithm mentor, Java instructor, detailed but quick revision guide for the following basic topics, revise array, a string, learn, okay, overall structure, single structure revision documented markdown with clear headings and subheading, use this top level structure. Markdown file, let's see कैसे बनाता है वो, and what the pattern is, when to use it. Okay, you're from UK. And in which year you are currently? Are you in first year or final year? Yeah, I got it. You're from UK. And किस year में हो अभी तुम college में? Are you also doing B.Tech or doing something else like BCA, or you're a working professional? Is the screen visible as I want? अरे यार, ये दिखा ही नहीं तुम्हें. Where is my browser? Subscriber. It is a cheat. Now it might be visible. This is the prompt I was getting from ChatGPT. So what we did, we have already created a detailed learning file for trees data structures, but we don't want to go in that much depth right now because we don't have so much time. We will be learning about the basics and standard problems, how we can solve standard easy to medium problems of tree data structures. And also we want to revise array and string and some patterns on those topics. It's completely fine, Rohit. If you don't know anything, you can start today. और अभी तो BCA किया है ना, you can do MCA as well and you still have time. Okay, BCA करके सब नहीं पता चलता है. What I was saying, कि we don't have time, so we will be revising quickly without wasting time. So that is why I created this prompt using ChatGPT. I asked it to write a detailed prompt for Copilot to generate a detailed quick revision guide with relevant easy, medium, hard problems related to the following topics in DSA using Java. And we can add more. You can also add relevant patterns and types of problems which can be important for Infosys assessment
for DSE and SP roles in these topics. Okay, what topics to cover? Revise array string binary trees, node structure, binary tree basic, implement traversal, in-order, pre-order, post-order, the problem. Okay. Each section had pattern and problem type that are commonly tested in Infosys. Pattern-oriented questions, clean logic, only questions, constraint-based problems, problem focusing on load time complexity, memory efficient logic, add problems category. Okay, we can copy this. Guided tree problems, clear problem statement, includes a style explanation, example walkthrough. Okay, that's related. Now wasting too much time. But not wasting, but taking too much time. Is it visible? Yes, it is. Let's get back to our copilot. And here we will give it the prompt and let's wait for it to execute. And till then, let's check out our schedule, what we need to do today. And the main goal today will be revising array strings and learning the basics of tree data structures. So we have already solved arrays and strings, but we need to learn tree data structures. This is one thing. And we will also be covering day 2 topics today itself. And we'll learn about binary search tree basics and standard problems tomorrow. Okay, after that we will be doing graph basics and graph application on day 5, and then we will learn dynamic programming. So still we can do it. Let's go. And after that, mm, let me mark it starting on 26 November, 26 November. Okay, that's enough. Let's go. कितना टाइम और लगेगा? Cloud offers 8.5. Let's do a typing task then. Text, power saver storage on. क्या इसको एक और constraint देना भूल गया क्या? कि we need separate files. Okay, it has created one single file containing all the details, and let's check out how it has done. Is it visible clearly? Yes, it is. Let's get back to it.
So last minute preparation document, array strings, binary trees, designed for pattern recognition and clean logic implementation. So how to use this guide? Array revision, string revision, binary tree basics, tree traversal, guided tree problems. Okay, how to use this guide? ये तो 10 दिन का रिवीजन प्लान बना दिया. But ठीक है, what we have 1.5 hours for array, we can give it right now. 1.5 hours for strings, we can do that also. So for the next 3 hours, we will be revising arrays and strings. After that, one and okay, 1 hour problems from both the topics. Okay, let's revise it as day one. And on day two, we need 1 hour for binary tree basics, 1.5 hour for traversal, 1.5 hour for tree problems. Okay, good tips. Pattern recognition is the key. Infosys tests standard patterns, focus on big O of n or n log n solution, handle edge cases, empty array, single elements, all the same elements, write clean readable code, no complex one-liners. Practice constraint-based thinking. What if n is equals to 10 to the power 5? Okay, two pointer, prefix sum and sorting tricks. Two pointer is a technique that we used. Okay, when to use it, template one, same direction, three pointer, Dutch national flag, and then prefix sum technique. Okay, Java template, basic prefix sum, subarray sum equals k, prefix sum with modulo, sorting tricks, pattern, sort plus two pointers, use case is paired, triplet sum, O and log n, sort binary search, find element in. Okay, it is very quick review kind of plan, but it's okay. Prefix with parity trick, pattern for windows, shrinking for minimum maximum, problem ladder arrays, easy problem, two sum, remove duplicates. From sorted array, move zeros, two pointer, best time to buy and sell stocks, running sum of 1D array, prefix sum. And medium problem, threesome, container with most water. This is what I was doing yesterday. Separation with equals k, prefix plus hash map. Separation equals k, product of arrays except self, dot color, longest consecutive sequence, merge interval, maximum separation. Kadana's algorithm. Trapping rainwater, first missing positive, sliding window maximum. Tag ka problem. Okay, we have the solution as well. It's good. We will look into the solutions only after trying out ourselves. And strings कब start हो गया? Hmm, track character occurrence using array for lowercase letter size 26, hash map for any character when range is unknown. Here we have three. Hmm, ये बहुत अधूरा अधूरा सा क्यों लग रहा है पूरा prompt? Hmm, easy problems in binary tree, maximum depth of binary tree, DFS, we put 104, basic recursion, same tree invert tree, binary tree level order traversal. Hey Vamsavardhan, I had started streaming just after seeing your message, but you went already. We need to update it a little bit.
Okay, MD file is okay. Thank you so much, Kamsavardhan. And how is your DSA going, Vamsavardhan? स्टार्ट किया या नहीं किया? अभी तक वेट ही कर रहे हो? ओके, this is good now. बट मेरी आवाज आ रही है या नहीं? यस, आ रही है. ओके, फाइन.
Start what? When will I start? I've already started what I have to do. I'm just improving on what I have. Let us solve this problem. Line. So here's the problem. You are given an integer array height of length n. There are n vertical lines such drawn such that the two endpoints of ith line are I comma 0 and I comma height of I. Okay, find two lines that together with the x-axis forms a container such that the container contains the most water, return the maximum amount of water. So actually I had not solved similar sliding window problems lately, तो मेरे लिए थोड़ा तो डिफिकल्ट ही है ये अभी भी, but I should be able to solve it quickly. What we have a array of numbers which represents the height of lines in which we need to find the container with the most water. So let's say this is the test case that we have. There are, this is the array that we have. So what the question states that we have a array height of length n is the size of the array in which there are n lines of height. Okay, stick to the problem.
We need to find two lines that together with the x-axis forms a container such that the container contains the most water. We will we need to return the maximum amount of water a container can store. So let's say if this is the given array, so okay, Vamsavardhan, bye bye. Um, what is the range? 1 to 8. I have come to study and share my study journey as well. I'm just documenting what I am learning, how I am learning, whatsoever. I'm not teaching actually. So if you are here to learn a new concept that I will teach, that is not the case. I myself is learning and I'm just trying to explain, learn how to explain what I know. This is the case. So, but why are you sorry? Why are you saying sorry to us? You can ask me anything. Okay. So the next line was of height 8 units. Really sorry if you wasted your time thinking that. I keep telling people that I'm not a teacher. I myself is figuring out. I should make a introduction clip in which I say that, hey guys, I'm not a teacher. I am learning myself. And थंबनेल थंबनेल में तो ऐसे ही लिखा है ना कि कैन आई क्रैक Infosys. So I'm not helping you crack Infosys, but I myself is figuring out how I can crack Infosys.
थंबनेल्स थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे. It should look like as a student 6 to 10 5. पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ. तुम्हें तो लगा ना कि मैं टीचर हूँ, तो फिर तो कुछ तो गड़बड़ है ना. सो मोस्ट ऑफ द पीपल वाचिंग मी माइट बी थिंकिंग कि ये कैसा टीचर है, इसे कुछ खुद नहीं आता है. व्हाई नॉट ब्रो. बाय द वे, अच्छा ठीक है, यू आर डूइंग बीसीए फाइनल ईयर. You can join my, you can join Discord server. There you we can talk on voice call as well. Okay, so this is the visual representation of the array that we have. Now what we need to find? We need to find the maximum water that these pillars can store. ब्रो टाइम नहीं है बिल्कुल भी. लाइक मेरे एंड सम एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आई वाज नॉट एबल टू डू एनी रिसर्च. और इन्फोसिस का असेसमेंट भी कुछ दिन के अंदर होने वाला है, तो ओके बडी, ऑल द बेस्ट, सेम टू यू. हम्म. We need to find the pillar that will store the maximum water. I'm from Bhopal, buddy, and this is the first time I'm streaming in the morning. Usually I stream at night. So मैं भी थोड़ा न्यू हूँ इस environment में, सुबह सुबह स्ट्रीम करने के लिए. Can actually do this. So okay. Bro, I'm not a teacher. You can call me Harshu or Bhaiya. Call me Bhaiya.
ओ, आप उठ गए। जल्दी से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके बता हर्ष। ज्यादा ड्राइंग कर रहा हूँ मैं। लेट्स गेट बैक टू इट। एक्सप्लेन करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन में डेप्थ में जा रहा हूँ। व्हाट वी आर डूइंग, वी नीड टू फाइंड द टू पिलर्स with the most water that they can contain, and the amount of water is, अच्छा ये तो रेन वाटर प्रॉब्लम के जैसा नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ अलग ही है। गड़बड़ी कर दिया मैंने पूरा। इसमें ये पिलर्स हैं, सिर्फ पानी पूरा पूरा भर जाएगा। सो ये तो ये कैसा यूजर नेम किया है हर्ष भाई? कुछ अच्छा सा यूजर नेम रख। We need to find the maximum water that two pillars can store, and this is the amount of water, matlab for this particular question the answer will be these two pillars। और इसका आंसर कैसे होगा? 49, 7 7 to 49। The question is container with most water, 11th problem in lead code। So we just need to find the maximum of what? First is the difference, we will use two pointer। पहला left pointer will be in the beginning, okay, and the right pointer will be on end, and we need to calculate first the difference in height। We will take the minimum, तो एब्सोल्यूट का डिफरेंस लेंगे। ओ ओ tomorrow when I was solving the problem I was taking the difference between these। We just need to take the smaller one of the two। hmm. Okay, let me explain what I was thinking। The proper problem is we need to find the two lines that together with the x-axis forms a container such that the container contains the most water। ये ट्रैपिंग रेन वाटर जैसा नहीं है। ट्रैपिंग रेन वाटर में जो बीच के कॉलम्स होते हैं उनकी भी वैल्यू होती है, बट इसमें क्या करना है, हमें दो पिलर्स के बीच का टोटल एरिया फाइंड करना है जिसमें वो पानी स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो हाउ वी कैन डू दैट के वी विल take each pillar from left and right and we will find the area between those two। So what we will need for that, if these are the two pillars, the height of this pillar is 8, height of this pillar is 7, so it can store water of in this much of area। Okay, so all the remaining pillars in between are nothing, they make no sense।
यस, मिनिमम हाइट लेंगे। एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस, अगर आई इज इक्वल्स टू समथिंग है यहाँ पे, ओके, इट इज एल, this is the low pointer, this is the high pointer, so we will take the difference between high minus low, so it will be equals to high minus low into minimum of the two. I was taking difference, क्या होगा, हाइट, एच टी लिख देता हूँ, तो हाइट ऑफ लो पॉइंटर एंड हाई पॉइंटर, हाइट ऑफ एल कॉमा हाइट ऑफ हाई पॉइंटर, एंड वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस, तो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम एरिया विल बी इक्वल्स टू maximum of this values of for all the pillars. Okay, so let's write it. Oh, ये कहाँ जा रहा है? Here. So what we can do, we have left pointer, we have right pointer, we will keep, ये तो स्लाइडिंग विंडो पे आ गया, टू पॉइंटर से करते हैं इसको। int low is equals to 0, int high is equals to height dot length minus 1. Okay, and y, and if we are doing this, is it possible कि ओ ओ ओ ओ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अभी दिखा क्या? भाई साहब, जेन आपके पहले क्यों नहीं आए? इतनी देर से मैं यही करे जा रहा हूँ, इतनी देर से यही टैब खुला हुआ है। क्या यूट्यूबर बनूंगा मैं? क्रेजी। हर्ष तो अभी भी है क्या स्ट्रीम में? हे रयुगा, हाउ आर यू बडी? पता नहीं यूट्यूब कौन सा नशा कर रहा है, मुझे जीरो व्यूज दिख रहे हैं। ओके, अभी दिखा होगा, मैंने इतनी देर से ये मेहनत की और मैंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। What a stupid thing it was. Let me write the code. अब यहाँ पे we have two pointers, high and low, and let's say int max a is the area, okay, and while we need to find the maximum area, let's say we start right and left here, so the area between these two pillars we will check and compare and store it in the max area. We will move the right pointer next,
We will drop the one जिसकी हाइट कम होगी, तो we will move the right pointer here and update the left pointer to the high pointer. We will compare the area. This जब तक इससे छोटा छोटा रहेगा, we will keep going. Okay, so what we can do, we have low, okay. So let's create int water is equals to match dot main of arr of low comma arr नहीं होगा या height होगा, height of low comma height of high into high minus low, high minus low. Okay, this is the area of water, and we will update the maximum area with max a is equals to match dot max of max a comma water. Okay, and after that, and we will check if height of low is less than height of high, then we will increase the left plus, else we will decrease right by one. And then we go, let's run it. Spelling. कहाँ ध्यान है मुझे? It worked. Let's submit it. चल गया. That's good. What we did, left pointer started from the left side.
we calculated the area between these two pillars, then we will check if low pointer is less than the high pointer. The height of low pointer is less than the height of high pointer. If it is low, we will move it forward. So this is the condition. If height of L is less than height of high, then we will do L plus plus. Else, else we will do height minus minus. Sorry, high minus minus. Okay, here we go. And यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है फिर हम इसको close करें।
We need to find the max node, and we are given the root node. Given a binary tree, find the maximum and minimum element in it. Okay, let's continue with this document only. So, what is a tree? Tree is a non-linear hierarchical data structure consisting of nodes connected by edges. Unlike arrays, linked lists, stacks, and queues, which are linear, the trees represent hierarchical relationship. Okay, we got it. Real world analogies, family tree like ancestor descendants, organization hierarchy like CEO, manager, and employees, file system like folders and subfolders, and HTML DOM structure, which is also hierarchical. Okay, so these are the real world analogies which are typically like trees. And why trees matters? Efficient searching, log of n. If we want to search any element in a tree, it can be done in big of log n in balanced trees. Used in database b plus tree, b trees and b plus trees. एक्सप्रेशन पासिंग में यूज होता है एंड नेटवर्क राउटिंग एल्गोरिथम्स में भी यूज होता है एआई डिसीजन ट्रीज में भी यूज होता है तो ट्रीज आर really useful and these are the terminologies that we need to learn. The first term is node. Node is the basic unit containing the data, and the next node, reference node. And root is the topmost node which has no parent. This is the topmost node, and tree contains different types of nodes. Okay, and after that, edge is the connection between the two nodes. So the connection between a and b, a and its child is the edge. Parent is the node with the children's child is the node with a parent. Sibling is the node with same parent. Leaf is the node with no children. Internal node is the node with at least one child. Ancestors, all node from the root to that node. Ancestors are all nodes from root to that node. Okay, so if we are talking about E and its ancestors, so all the nodes from root to that particular node are ancestors, and descendants all nodes in subtree of a node. That means if we are talking about descendants of B, all the nodes below it are its descendants. Degree, number of children a node has. So a binary tree has a degree of 2, and depth, distance from the root to. Okay, so depth of f, अच्छा ठीक है, for every particular node we have different depth. So let's say for B the depth is the distance from the root node, that is 1, and depth for F is 2. Okay, the number of edges from the root node to reach that particular node. Height, distance to the deepest leaf, that is the height. Depth is the distance from the root node to that particular node. Level is the depth plus 1 or same as depth varies. Okay, so root is the level 0, and the second level is level 1, and level 2 and level 3. Level 3, which has the nodes which has no child, are known as leaf, and the first ancestors of leaves are called leaves. And ठीक है, subtree, tree formed by nodes and its descendants. Path, sequence of nodes connected by age. Forest, collection of disjoint trees after removing roots. Okay, if we remove the root, it will become a forest.
formula to remember: total edge is equals to total node minus 1. For a tree with n nodes, edge is equals to n minus 1. Okay, ठीक है. Height of tree with one node is equals to 0. Height of one node is equals to 0 or 1 based on convention. Maximum node at level is equals to 2 to the power L for binary tree. So if we start from this, so maximum number of nodes will be 2 to the power L if it is true. So the total number of nodes possible is equals to 2 to the power 2, that is 4 here. And okay, exponentially grow karega number of nodes. And maximum nodes in a binary tree of height h, 2 to the power h plus 1 minus 1. So if we are given the height of the tree, height of the tree is the length from number of edges from the root node to the leaf node. So let's say in this case, the height is 1, 2, and 3. So the height is 3, and total number of nodes, possible nodes, will be equals to 2 to the power h plus 1 minus 1. So that will be 8 minus 1, that is 7. Is it true? 3 plus 1, that is 4. 16 minus 1, 15. Total possible nodes will be 15. So how we can, but this is not, if it was a binary tree, it has two childs. So 3, and 3 plus 4 is 7, plus 8 is 15. So it is correct, 2 to the power h plus 1 minus 1. Okay. Types of tree: general tree, each node can have any number of children. Binary tree, each node has at most 2 childs. Full binary tree, complete binary tree, perfect binary tree, balanced binary tree, degenerate, skew tree, binary search tree, self-balancing trees, evil tree, red flag tree, split tree. Okay. After that, different trees. A binary tree is a tree where each node has at most 2 child, referred to as left child and right child. 3 node class foundation. Basic structure in Java. Yes. Okay. And data. Left, right. And we will have a constructor, public tree, basic, which has been data. And this dot data is equals to data. Left is equals to null. So this is the implementation of tree data structures, and we can have data stored in the node data and reference node. We have to write child constructor fits value. We have okay.
So in this constructor, what we have, okay, so this is the implementation, and let's build a simple tree. Let's say we want to build this tree. So how we can do that? Mm, We will create करते हैं class tree node.
ये एक अलग मुद्दा है। वो वाला स्ट्रक्चर भी। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, और ये बेसिक, इसको हम बाय द वे इसको हम कहते हैं प्री ऑर्डर। अभी हम तीनों ऑर्डर्स को भी अच्छे से समझेंगे। अभी से चलते रहती है, ट्री कैन एक्चुअली ग्रो, और वो और तीन और तीन और तीन और, समझ रहे हो, ऐसे हायरार्की बन रही है। तो ये तो हम पेरेंट है उनका, लेकिन उसको भी हम से लेकर टू, उसी को बाइनरी ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टैंडर्ड बाइनरी ट्री कुछ ऐसा नजर आता है, जिसमें सारी चीजें सॉर्टेड ही है। एक स्टैंडर्ड बाइनरी ट्री कुछ ऐसा आता है, देखिए। एक स्टैंडर्ड बाइनरी ट्री कुछ ऐसा होता है। मतलब स्टैंडर्ड एज इन मैं बताऊंगा अभी, बहुत टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज होंगे यार, ऐसे तो मतलब बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स आपने 100% कहीं देखे होंगे, डीएसए के कोर्सेज के थंबनेल्स में या फिर ये सब। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज अ बाइनरी ट्री, दिस इज अ बाइनरी ट्री, राइट। इसमें कुछ वैल्यूज हो सकती है हमारी, कुछ भी ले लो यार, 1 2 3 4 -1 6 9। ठीक है, दिस इज अ बाइनरी ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके भी दो चिल्ड्रन है, इसके भी दो, इसके भी दो, इनके 0 0 0। ठीक है, बाय द वे इसको हम कहते हैं एक परफेक्ट बाइनरी ट्री, जिसमें हर नोड के दो चाइल्ड है, एक्सेप्ट लास्ट लेवल, क्योंकि ऐसे तो यार वो बढ़ता ही रहेगा ना। Sorry, we are back. देखो, अगर सबके दो बच्चे होंगे तो वो तो इनफाइनाइट ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट कहते हैं कि भाई किसी भी लेवल पे रुक जाओ, जैसे अगर इतना नहीं होता, ये तीन नोड होते, तो भी परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाता है। इसके बारे में भी थोड़ी देर में, अगर आपको आपको मैं देना चाहूँ, तो और एग्जांपल्स हमारे ऐसे, जैसे ये एक बाइनरी ट्री होता है। देखो, मैंने ये लिखा, मैंने लिखा ये, फिर मैंने मान लो ये बनाया, ठीक है, एंड फिर मैंने मान लो ये बनाया। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ जी है। ठीक है, हाँ जी है, हाँ जी है। आप देख सकते हो, इसके दो चिल्ड्रन है, इसका एक ही है, इसके भी दो है, और इन तीनों के 0 है। तो दिस इज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, दिस इज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, और अब बाइनरी ट्री में ना, स्पेसिफिकली मेरे दो जो चाइल्ड होते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि बाइनरी ट्री में दो ही चाइल्ड होते हैं। ठीक है, अब ये 0 1 2 का क्या मतलब था, वो ये था बेटा, कि रियलिटी में इसका भी एक नल था, इसका लेफ्ट राइट भी नल था। लेफ्ट राइट सबके होते हैं बेटा, लेफ्ट राइट सबके होते हैं, बस नल का कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। थोड़ा सब लगा यहाँ, मैं आपके सामने दो बाइनरी ट्री अब बना के दिखाता हूँ। जैसे एक बाइनरी ट्री है ये, सिंपल सा एक बाइनरी, मैं आपको इसलिए हद से ज्यादा अच्छे से पढ़ाया था, पूरी दुनिया में किसी ने इतने अच्छे से आपको नहीं पढ़ाया होगा। याद आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे फिबोनाकी में हम अपने आप को दो बार कॉल कर रहे हैं, हनोई में भी अपने आप को दो बार कॉल कर रहे थे। अपने आप को अगर हम दो बार कॉल करते हैं, तो मैंने आपको समझाया था फंक्शन का स्ट्रक्चर या मेथड का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा रहता है। ठीक है, यस, अगर आपने वो प्री इन हायरार्कियल जो भी
नहीं भाई नहीं, मैं हेड नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, आपस में कजन। ठीक है, अब एक से लेकर टू कि हर में इसका फर्क है ना, इसका फर्क है। यहाँ पे दो नेक्स्ट होते हैं, मैं इसको दो नेक्स्ट की तरह ही बोलता हूँ हमेशा। ठीक है, कि लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। तो चलो फटाफट एक बात बताओ, एक ट्री बनाए, एक ट्री बनाए, एक ये वाला ट्री बना ले, चलो आ जाए। ये जो ट्री है, क्या हम इस ट्री को बना के दिखाए? हाँ जी, बना के देखते हैं, फटाफट आ जाते हैं यार, इंटेलिजेंट आइडिया। आइए, ध्यान से सुनना, ये चीज तभी समझ नहीं आएगी अभी, अगर लिंक लिस्ट आता है तो तुम्हें इसमें मजा आएगा। तो एक नया पैकेज बनाएंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन। आइए, आ जाइए, PSVM। मैं बना रहा हूं कुछ नोड, तो क्लास नोड। आइए, मैंने बोला मेरे पास खुद की वैल्यू है, मेरे पास लेफ्ट है, मेरे पास राइट है, और अपना एक प्यारा सा, आप अपना एक प्यारा सा ये भी बना ही लो ना यार, ताकि तुरंत हम, कंस्ट्रक्टर तो पढ़ ही रखा है ना हमने यार, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लीजिए, क्लास नोड बन गया, हाँ जी बन गया। छुपा लो इसको, छुपा लो अभी के लिए, या दिखा दो, मर्जी है। चलो इधर आओ, अब कुछ नोड्स बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया नोड ए, कुछ भी नाम दे दो ऐसे, तो इज इक्वल टू न्यू नोड, और हम बनाने वाले ये वाला ट्री बनाता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 है, फिर 4 2 है। ठीक है, एक 4 वैल्यू के साथ है, एक 2 वैल्यू के साथ है, इनका नाम कुछ दे दो, बी सी दे दो। ए के चिल्ड्रन में बी सी करना चाह रहा हूँ। फिर -1 1 है। ठीक है, तो कॉपी करते हैं, 4 और नोड्स है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, एक सेकंड बस मेरे को दे दो। ठीक है, अब ये मैंने क्या बनाया है, ए में 3 है, 4 है, 2 है, डी में ये -1 है। बेसिकली मैं ये करना चाह रहा था, आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आपको स्ट्रक्चर यार ऐसे भी तो बना सकते हैं। हाँ रुकिए एक सेकंड दो, मेरे को ट्री ये बनाना था बेटा। क्या बनाना था? हाँ, इसमें करके, so फर्स्ट नोड जो रूट नोड होगा, रूट व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक। This is the tree that we need to make. So for that we will get root node is equals to new node with value 1. Okay, and this is the root node. Then root dot left is equals to new node 2, and root dot right is equals to new node that is equals to 3. After that, if we want to continue without naming it, we can do, okay, instead of doing this, there are two ways that in which we can do that. Instead we can create root b is equals to new node 2, and
क्या कर रहा था ना, we are creating nodes. C node will be node with value 3. And I was okay. So we have created 3, then 4, then 5, and let's say 6 also. यहाँ पे we can 6. Okay, we have created the nodes. Now we will connect them. यहाँ पे C की जगह D आएगा, E and F. We could also do directly by adding next on the root only. So what we can do, we need to connect them now. So root dot left is equals to B. Okay, we can do this on the opposite direction. So root dot left is equals to B. Root dot right is equals to C. है ना? Right child of the root is 3. After that, what we need to do, we need to create the child for B, that is 2. So 2 के child क्या है? Left child left 4, right child left 5. So what we will do, B dot left is equals to 4 and B dot, oh, not 4. We have to connect these nodes. So we will add D. B dot left will be D and B dot right will be equals to E. Okay, and after that we need to add the childs to 3 also. 3 कौन सा node है? C node is named as 3. So what we will do uh, C dot left is equals to null. C dot left तो already null है. C dot right is equals to 6. 6 is F. Okay, F. So this way we have created this node and we got the implementation how to create a few data structures. Now what we can do, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या, अब मेरे को कनेक्शंस करने हैं। अभी मैंने ट्री नहीं बनाया, मैंने नोड्स बना दिए स्कैटर्ड, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ ए का 3 का चाइल्ड 4 और 2 है, नोड है यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे मान लो मैंने एक मेथड बनाया। अब मेन फंक्शन छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है, ठीक है, ये बचा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रूट नाम से इसको ले लिया, किसी भी नाम से ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही तो है, एक्स लो वाई लो, ठीक है, हम रूट नोड से ले लेते हैं, बचा है, जिसमें मैं सिर्फ रूट नोड दे दूं ए, सिर्फ ए। मान लो ये सब चीजें आपकी छुपी हुई है, इनफैक्ट छुपी भी छोड़ो, ये बनाओ, देखो मैं यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे मान लो मैंने एक मेथड बनाया। अब मेन फंक्शन छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है, ठीक है, ये बचा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रूट नाम से इसको ले लिया, किसी भी नाम से ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही तो है, एक्स लो वाई लो, ठीक है, हम रूट नोड से ले लेते हैं। तो मेरे को डिस्प्ले करना है और आपको सिर्फ ये फंक्शन कंप्लीट करना है, यू हैव द रूट। अब मुझे नहीं पता कि मेरे लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है या नहीं है, उसके लेफ्ट राइट है या नहीं है, उसके लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट नहीं है, कितना बड़ा ट्री है, ट्री में कितनी वैल्यूज है, कुछ भी नहीं पता। सारे एलिमेंट्स को आपको प्रिंट कराना है, दैट इज योर थिंग, ठीक है। ये जो है वापस अगर दिखाऊं मैं आपको ये सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, किसी भी ऑर्डर में करा दो, अभी के लिए वो हम ऑर्डर बाद में देखेंगे। आपको 3 4 2 ये किसी भी तरीके से आपको ये जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आपको प्रिंट कराने हैं। तो कैसे करेंगे, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं रिकर्जन लगेगा, रिकर्जन से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, मेरी बात को सुनो, पहले मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा, ड्राई रन भी देखेंगे, बट मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, क्या हम मैजिक पे विश्वास रखते हैं? किसके? हम रिकर्जन के मैजिक पे विश्वास रखते हैं पूरा। मतलब मेरे पास अभी रूट है, मैं उससे लेफ्ट राइट जा सकता हूँ इवेंचुअली। मैं क्या करूंगा, मैं इस पे हूँ ना, लिंक लिस्ट कैसे प्रिंट होती है रिकर्जन से, अपनी वैल्यू प्रिंट करो आगे जाओ, सिंपल। तो यहाँ पे भी हम उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे भाई, ज्यादा नहीं सोचना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो प्रिंट करा दो, हम जहाँ पे भी है अपनी वैल्यू प्रिंट हो सकती है, नहीं हो सकती? भैया हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, गैप दे दो, ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए ये लो, अपनी वैल्यू प्रिंट कराओ। फिर क्या करो, लेफ्ट की जितनी भी वैल्यूज है, राइट की जितनी भी वैल्यूज है, रिकर्जन लगा दो। देखो समझो मेरी बात, ठीक है, रिकर्जन लगा दो, ये सारी लेफ्ट की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, ये सारी राइट की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। मेरा फेथ है, लेफ्ट की सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा ये। let's see.
ये मैं मान के चल रहा हूँ, मैं रिकर्जन पे इतना विश्वास रखता हूँ यहाँ पे भी सिमिलरली, ठीक है, कि ये राइट की सारी वैल्यूज को प्रिंट करके ला देगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब इसमें एक छोटी सी कमी है बस, क्या, रिकर्जन में बेस केस भी होता है। तो ऑब्वियसली बेस केस भी सिंपल है, आप लिंक लिस्ट प्रिंट करते हुए क्या करते थे कि अगर मेरा जो टेम्प है या जो रूट है जिस पे मैं जा रहा हूँ हेड है, अगर वही नल हो गया तो आप खत्म कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है, पीछे आ जाओ। और बाय द वे अगर रूट नल हुआ तो नल की वैल्यू ऐसे भी एरर दे देगी, है ना। अब रन करके देखिए इस कोड को, देखते हैं, डिस्प्ले चलाया था उसमें मैंने, देखो प्रिंट हो गई वैल्यूज। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रिंट हुआ 3 4 2 1 1 6 9 ना, 3 4 -1 फिर 1 फिर 2 6 9। अभी हम बहुत ही प्यार से प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, दुनिया में कोई इससे अच्छा नहीं पढ़ाएगा जो मैं आपको भी कराऊंगा, Okay. मैं बन नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस, बट अभी थोड़ी सी एक बात समझा देता हूँ आपको So थोड़ा if we बहुत। need to just print the nodes of a tree, what we can do, we can do south and क्या root dot value. Okay, this will print the value, and after that वो अगर आपको रिकर्जन आता है, मैंने बोला पहले रूट नोड we'll को प्रिंट call कर दो, the फिर display लेफ्ट में ठीक है, ये तो हम अभी आगे बढ़ेंगे, प्री ऑर्डर शी ऑर्डर left and right. So with that, have- okay, and then we will call the same method display root dot left and display root root dot right. Okay, so this is it, and the base case will be if root is equals to null, then we will return, simply return. Okay, and let's run it. It should print all the nodes. Okay, could not find out load main class implementation. क्या प्रॉब्लम है? ओ डिस्प्ले नोड कभी यूज ही नहीं हुआ ना. Okay, this is the problem. This is the main method. It is the helper method, and here we will call the display method root. Now it will work. Reached the end of file while parsing. One, two, three, four, five, six. Okay. रन कोड करने पे एरर क्यों दे रहा है ये? ऑर्डर भी हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या चल रहा है, बट एक चीज़ अगर मैं आपको पहले से ही समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं लेफ्ट की वैल्यूज को बाद में भी प्रिंट करूँ तो क्या सारी प्रिंट होगी वैल्यूज? क्यों नहीं होगी? बिल्कुल हो गई, एक अलग तरीके से हुई है, 3 2 9 6 4 जो भी है, पक्का होगी। इनफैक्ट अगर मैं जो And it has printed sequentially 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 3, 6. 1, 2, 4, 5, then 3 and 6. Okay. So it is pre-order conversion.
Let's not run it with that. 124536. I got से it. काम कर रहा हूँ, इनको मैं कॉल के बीच में करूँ। सुनना मेरी बात, लेफ्ट की कॉल लगाई, प्रिंट किया, ये लिखा। नहीं हर्षित, जो आपने बोला वो नहीं होता, समझाऊंगा अभी आपको। तो भी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, बट इस बार अलग तरीके से हुई है, बट सारी वैल्यूज प्रिंट हुई है। अगर अब मैं इसमें ये चीज़ कर दूँ क्या, कि ये जो था ये इसके बाद हो, और ये जो था राइट वाला जो था ये इससे पहले हो, ठीक है, तो रन करूँ, तो भी बेटा सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, अलग तरीके से हो रही है। अच्छा, अगर मैं ये लिखूँ कि भाई पहले लेफ्ट की सारी वैल्यूज प्रिंट करो, फिर राइट की, फिर खुद की, जिसको हम पोस्ट ऑर्डर कहते हैं भाई, प्रिंट हो गया सारा। अगर मैं ये कहूँ कि पहले राइट की वैल्यूज प्रिंट करो, फिर लेफ्ट की करो, फिर खुद को करो, तो भी सारी प्रिंट हो गई। तो मैंने टोटल कितने तरीके बताए, कोई मेरे को बता सकता है गिन के? कोई मेरे को गिन के बता सकता है तो बताओ, बताओ। 9? नहीं भाई, 6 ना, 6 तरीके थे। कोई नहीं, हम इसको भी डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करो। बट मैंने आपके सामने 6 अलग अलग कोड चलाया बेटा। बेटा 6 ही तो होगा, मेरे पास 3 लाइनें हैं, 1 2 3, तीनों अलग अलग लाइनें हैं, 3 चीज़ों को अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल 6, मैथ्स का सवाल है, ठीक है। तो 6 तरीकों से मैंने आपको ट्री की वैल्यूज प्रिंट करके दिखाई, और साथ सब में हो गया, लेकिन अलग ऑर्डर में प्रिंट होगी, बट प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि भाई रिकर्जन से ट्री पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले खुद की वैल्यू प्रिंट कर दो, लेफ्ट वाली सारी वैल्यू प्रिंट कर दो, राइट वाली। अब ये तो हो गया मैजिक। अब थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि आप में से काफी बच्चे होंगे जिसको शायद ये समझ नहीं आया होगा। एक बार चैट में भी लिखो प्लीज यार, किस किस को मतलब समझ नहीं, किस किस को फील नहीं आई कि ये सारी चीजें करके ला देगा, किस किस को फील नहीं आई कि ये सारी चीजें करके ला पाया। वॉइड था आगे, मैं वो नहीं लगा रहा, और मेरे पास मान लो एक रूट थी, नो रूट लिखा हूँ, समझ लो। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक तो ये था इफ, देखिए अगर कोई फोन कॉल वाली कॉन्वर्सेशन याद रखता है कि मान लो यहाँ पे प्रिया, Let's try to solve a problem. Basic understanding and idea तो लग गया. Hmm. Okay. GFG create problems. So this is a question given a binary tree. You have to return the size of it. Size of binary tree is defined as number of nodes in it. So we need to count the number of nodes. We have given the main node, that is the root node. And what we can do with this is get size method we have. We will return, okay, if node is equals to null, we will return, okay, and then we will call get size of node dot left है ना, yes, node dot left and get size node, oh, वेरिएबल में स्टोर करना होगा. So int left is equals to get size of node dot left and int right is equals to get size node of right, okay, and then we will return left plus right plus 1. That's run it. Using return value, okay, int return करना, so it will be 0. It was
size of a tree we have found. Given our binary tree, maximum or binary trees problem. So this is the problem. Given a binary tree, find maximum and minimum element in it. Okay, maximum and minimum element in it. Find max, find min. So how we can implement it? We have the root node. Hmm, okay, if root is equals to null, we will return if into max is equals to 0, and then we will call find max. Hmm, max is equals to C max is equals to find max of root dot left. Left means yeah, left means is equals to root dot left, and right max is equals to find max of root dot right. Hmm. After that, we will update max is equals to if this is a tree. Get max method should check the value of this. So it should max is equals to max dot max of max comma root dot value root dot data. Okay. Hmm. Where should I place this statement?
left max is equals to find max of root dot left. Okay, and right max is equals to find max of root dot right. Okay, and then we will create a new int max is equals to max dot max of left max comma right max, and we will return max. It should work. My approach is wrong, but what's wrong with math.max? Okay, how they did it? Maximum in nodes left subtree, right subtree. Okay, this is the binary tree. Return the max value in binary tree if node is equals to null. Okay, integer dot main value we will return. Okay, result is equals to node dot data. Left result is equals to find max node dot. Okay, तो यहाँ पे simply math dot max क्यों नहीं लिख सकता मैं? Int result and this, and we need to update result is equals to math dot max of result comma address comma r. Oh, if l plus is greater than result, then result is equals to address left result. If right result is greater than result, then result is equals to right result, and then we will return result. Okay, अब this find max. Okay, what is the problem? Cannot find simple result is equals to. Oh, this is the problem right now. Root
शायद पहले भी रूट का ही प्रॉब्लम था। यहाँ पे भी तो हाँ भी कोड ही नहीं लिखा था पूरा, प्रॉब्लम का। ग्रेटर देन को लेस देन कर देंगे। आंसर गलत आ जाएगा। 8 and 2 यहाँ पे आएगा। Still wrong. Why? It is not match. मिनिमम में क्या कर पता है? Sum of tree. Given a binary tree, the task is to check if it is a sum tree. A sum tree is binary tree where the value of node is equal to the sum of the nodes present in its left subtree and right subtree. Practice. What are the two? Checking every node or calculating left right subtree sum directly. Post order traversal. Let's see if I'm able to solve it. So we need to check a sum tree is a binary tree where the sum of node is equals to the sum of nodes present in its left subtree and right subtree. So if root is equals to null, we will return int else sum is equals to is sum. Oh, first we need to calculate. Return 0, otherwise int left sum is equals to sum of root dot left and int right sum is equal
equals to sum of root dot right, and we will return left sum plus right sum. Okay. Hmm. Now we need to check if it is true for all the nodes. So Boolean, what can be done? We have a tree 3 comma equal to value of left child plus right child is equals to the current child. बट ये तो बुलियन रिटर्न करेगा. Hmm. Stupid me. प्रिया है, प्रिया के पास एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, प्रिया के पास एक इन्फॉर्मेशन आई। ठीक है, फिर प्रिया वो इन्फॉर्मेशन अपने दो दोस्तों को, विशाल को और आशीर्वाद को
भेजते हैं। फिर आशीर्वाद विकास को और